Guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to work it out to his Coy Mistress by none other than the Andrew Marvell. You must have heard about his name. आपने कहा सर Andrew Marvell, the metaphysical poet. जी हाँ, the metaphysical poet. They have the different stream. Generally they have the Mr. आपने कहा सर Don इनके साथ आता है. सर हमारे साथ कई सारे पॉइंट हैं जिनको हमें डील करना होता है. Andrew Marvell हो गया, रॉबर्ट हो गया. सर कैसे डील करना है, इनमें क्या अलग है? And what about this particular poetry to his Coy Mistress? आपने कहा सर जनरली क्या बताया? इस ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो आपको पोइट्री को समझने के लिए क्या जरूरी है. इन माय लास्ट वीडियो आई टॉक अबाउट ब्रिटिश पोइट्री. आपको पोइट्री को कैसे पढ़ना है, पोइट्री को पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे आप रीड करेंगे. सबसे पहले मैंने उसमें पॉइंट बताया था दैट यू नीड टू रीड लाउडली द पोएम सो दैट यू कैन हियर द सर्टेन साउंड्स. उसके बाद यू नीड टू फॉलो द डिक्शनरी टू क्लियर द सर्टेन मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स. जी हाँ, ये सब मैंने कहा था उस वीडियो में, लेकिन मैंने एक चीज और कही थी सबसे इम्पोर्टेंट थी that you need to check the style of poets. जी हाँ, style of poets क्या लिखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं. or to know the pun, sir, remember the pun, the internal and external meaning. दो चीजें आनी चाहिए. अगर मैं किसी को बोलता हूँ that I'm talking about the to his Coy Mistress, then I need to read these first four line of the poem. So here, had we but world enough and time, the coyness lady were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass a long love's day. Which way to pass a long love's day. So what's this all about? He is a love poet. So I don't say he's a love poet, he's a lust poet. जी हाँ, आपने कहा सेक्सुअलिटी को होना हाइट अपनी पोएट में डिफाइन किया है एंड्रू मार्वल ने. सो अगर मेरे को डिफाइन करना हो किसी एक ऐसे पोएट के बारे में जो कि सेक्स को थ्रू लस्टफुल वे में डिफाइन करता है थ्रू हिज ओन पोएट्री, आई वुड रियली रेफर एंड्रू मार्वल. जी हाँ, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. अब मेरे को इस पोएट्री में क्या बताना है, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स दैट वी रियली नीड टू कीप इन आवर माइंड टू डिफाइन दिस पोएट्री. इस पोएट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए आपको. वो बेसिक्स से होंगे पोएट्री क्या है, पोएट्री को कैसे पढ़ना है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीड द पोएट्री, किन किन के लिए बेटर है. सर जनरली दिस क्लास इज ऑल अबाउट फॉर द स्टूडेंट दोज आर वर्किंग द ब्रिटिश पोएट्री, डेफिनेटली दोज परस्यूइंग द इंग्लिश ऑनर्स और द एमए इंग्लिश. किसी भी यूनिवर्सिटी से, वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी कर रहे हो आप, यू हैव टू गो टू द Coy Mistress. जी हाँ, आपको ये पोइट्री पढ़नी ही पड़ेगी. एंड देन वी नीड टू वर्क इट आउट. करेक्ट फोकस ऑन द लस्टफुल डिजायर. आई रिपीट माय वर्ड्स, द लस्टफुल डिजायर्स of whom? The Andrew Marvell. The Andrew Marvell tried to pursue his lustful desire through his poetry. मैंने इसके बाकी ये पार्ट नहीं लिखे हैं because not possible to write on every word, but really you love to read it when you get everything clear. Then here, it focuses on the lustful desire of the man attempting to entice a female virgin. He really want to tempt her. He want to get, not to love her. Really, it's the love for the sake of lust only. Then it focuses on the lustful desire of the man attempting to entice a female virgin, the mistress, into sexual intimacy. That is known as to be a seductive poem. Sir, आपने बोला seductive poem है. जी, this is a seductive poem. You really need to work it out that. What does mean the seductive poem? You need to search yourself. इसको हम वर्कआउट करेंगे, समझेंगे सिलेक्टिव पॉइंट क्या है, कैसे सिलेक्टिव पॉइंट लव पॉइंट से अलग होती है. हाउ अ सिलेक्टिव पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द लव पॉइंट एंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्टिव पोएट्स एंड द लव पोएट्स. यू नीड टू वर्क आउट दिस. आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ओवर दिस टॉपिक वेरी सून. यू नीड टू क्लियर दैट एंड देन जंप ऑन द नेक्स्ट वन. ट्राई टू पुट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. जी हाँ, यहाँ पे टू पुट और ट्राई टू पुट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट टू दिस. उसका एक छोटा सा व्यू पॉइंट था, वो लॉजिकल था, जेन्युइन लॉजिकल था. फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वी नीड टू क्लियर दैट. फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू that can be summed up in a short phrase, and that short phrase is life is too short, let's get it on before you and I decay. It's all try to convince somebody to have sex with you by saying these statements, and this is all about poetry to his Coy Mistress. What he tried to say, what really how he tried to convince her, वो पोएट दिखाता है. अगर आप इसके फर्स्ट वेज को देखोगे, सिर्फ फर्स्ट को आप समझ पाओगे व्हाट ही ट्राइंग टू अचीव.
रिपीट, आई एम रिपीटिंग दिस वन. हैड वी बट वर्ल्ड इनफ, सिर्फ हम दो ही वर्ल्ड है जनरली. हैड वी बट वर्ल्ड इनफ, जी हम दोनों ही वर्ल्ड है, हमें और किसी जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड एनीबडी एल्स. एंड टाइम द कॉयलेस लेडी वर नो क्राइम. We are not doing any crime. Generally, we are not doing any crime. We're just making love to each other. He trying to pursue her. Now we would sit down and think which way. बैठते हैं, बैठ के सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है. And then to walk and pass a long love's day. That how going to pass a long love's day. This is the description of to his Coy Mistress. For more detail or for more work, you need to go on an interaction face to face. Because this is a shorter poetry where I am not able to complete each and every line through video class. आपको ये क्लियर हुआ हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कई सारी वीडियोस के पॉइंट मिलेंगे जिनको आप डील कर सकते हैं. हाँ, व्हाट यू रियली नीड टू वर्क इट आउट, कैसे क्लियर करेंगे, बेसिक्स हमारे ये हैं. इसको लेकर हम पूरी पोएट्री को पढ़ेंगे. एंड व्हेन वी रीड ईच एंड एवरी लाइन वी विल गेट एवरीथिंग क्लियर. I hope you're going to do this. Catch you very soon with a new video just for you guys. Bye.